can begin with this particular session. So guys, all of you are requested to give a thumbs up in the comment section so that we can begin this particular session. Okay. So guys, I am getting the responses here. So once again, a warm welcome to all of you in the today's top 50 MCQs session on EduTap. And guys, this is basically the revision session for the fast track information that we have covered in the past 1 week. That means all the news articles that we have covered in the past 1 week in our fast track sessions. Today we are going to revise them in the form of multiple choice questions. And today I'm going to take a top 50 MCQs for the month of August 2022, and this is the part 2 of this particular series, and we are already done with the part 1 of this particular series. If you have not watched that, kindly go back after this particular session and kindly watch it, because it is really very relevant. And as we all know that NABARD grade exam is approaching, so that's why it is really very much important from the exam point of view. ठीक है जी? So basically this particular session is very important for the RBI Grade B, NABARD Grade A as well as the SEBI Grade A exam. ठीक है? तो आज के दिन हम करने वाले हैं revision MCQs for the revision of the fast track session of the past 1 week. ठीक है? So hi Megha, hello everyone. I really believe that all of you are preparing really very well for upcoming exams. ठीक है जी? So before starting with the session, if you are new to our YouTube channel, guys, kindly subscribe it and press the bell icon to receive all the latest updates of the courses and videos offered by us. And you can also join our Telegram channel to get the access to the PDF of these sessions. तो हमारे इस particular session की और बाकी के जो session जो YouTube पर आते हैं उसकी PDF को अगर आप access करना चाहते हैं, then kindly join our Telegram channel. ठीक है जी? So now before beginning with this particular session, there is a request to all of you that you are required to calculate your scores as well for this particular session, that out of 50 what exactly was your score. I will be asking you that after my today's session. ठीक है? Apart from that, when you will be answering the questions, just put out the question number and then the option that you think is the right answer to that particular question. ठीक है जी? I hope this is clear. Let's move on to the very first question, and the very first question is National Tiger Conservation Authority NTCA has tied up with which public sector undertaking for the transcontinental relocation of cheetah in its historical range in India? So guys, quickly tell me that with which one of the following organizations NTCA has basically partnered जिससे कि वो यहाँ पर relocation कर सके cheetah की in its historical range in India. Is it Bharat Petroleum, Indian Oil, Hindustan Petroleum, Bharat Electronics Limited or GAIL India? So guys, quickly tell me what is the right answer in the comment section, that what exactly is the right answer to this question. Question number 1 here, it is on screen. So here guys, the right answer to the question is option B, that is Indian Oil. So Indian Oil is basically going to contribute 50.22 crores in 4 years for this particular project, in which the NTCA will be basically relocating cheetah in the historical ranges of India. So this particular answer, Megha, Janni, Dolly, Vishal, everybody has answered the question correctly. That is option B, Indian Oil. ठीक है जी? Well done guys. Let's move on to the next question. And the next question is, UNESCO has recently added a 106-year-old astronomical observatory from India. See, India की 106 साल पुरानी astronomical observatory जो है उसको उन्होंने important endangered heritage observations in the world की list के अंदर add किया है. And you are required to tell me that in which state this particular 106-year-old India's observatory, astronomical observatory, is located. Is it Rajasthan, Odisha, Tamil Nadu, Bihar or Meghalaya? So guys, quickly tell me what is the right answer. See, this question, this particular session is going to be a rapid fire session. ठीक है? बहुत जल्दी हम 50 MCQs को खत्म करने वाले हैं इस particular session के अंदर. So let's see who will answer the question correctly here. The old astronomical observatory from India, जिसको कि recently UNESCO ने अपनी list के अंदर ऐड किया है, what exactly the name of the state where it is located? And guys, here the right answer is Bihar. ठीक है जी? तो वो लंगट सिंह कॉलेज इन मुजफ्फरपुर इन बिहार, it is basically established there. ठीक है जी? I hope this is clear. So I hope this is very much clear to all of you. Let's move on to the next question. And guys, the next question is about the Namaste scheme. ठीक है जी? तो Namaste scheme के ऊपर है अगला question, and I always tell you that whenever you find such kind of acronym, what you are required to remember the full form. See,
full form of such kind of schemes, acronyms, portals are really very important from the exam point of view, because यहाँ पर एग्जाम के अंदर इनके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है जी, आई होप दिस इज क्लियर. सो क्विकली टेल मी दैट व्हाट एग्जैक्टली ई स्टैंड्स फॉर इन द नमस्ते स्कीम. So here E stands for ecosystem in the Namaste scheme. ठीक है, here Namaste stands for National Action Plan for the Mechanized Sanitation Ecosystem. See, with this particular scheme, what exactly the government of India is trying to do? They are basically going to ensure that there is basically less number of sanitation fatalities. और यहाँ पर जब हम सीवेज को साफ करने की बात करते हैं, cleaning sewage system, then what exactly they are going to do? They are going to employ the machines, and for that the skill developing training sessions will be there for these sanitation workers, so that they can learn how to operate these kind of machines. And with the help of such kind of machines, we will be able to lower down the sanitation facilities which basically happen during these sanitation works. For example, the cleaning of the sewage part. ठीक है जी. So here I really think that this is very much clear to all of you. और जब हम बात करते हैं किसी स्कीम की, very important thing that कि किसने उसको लॉन्च किया है, तो व्हेन आई टॉक अबाउट दिस नमस्ते स्कीम, इट इज बेसिकली बीइंग लॉन्च्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन एंड the Ministry of Social Justice and Empowerment. Apart from that, Ministry of Housing and Urban Affairs is also the part of this particular scheme. So all such kind of details you are really required to remember from the exam point of view whenever you are covering any scheme. वो scheme का नाम क्या है, उसकी full form क्या है, उसके बाद उसके features कौन से इनमें वो launch हुई है, साथ में beneficiaries कौन होंगे, ये सभी information आपको पता रहने चाहिए एक scheme के बारे में. ठीक है जी, I hope this is clear. Let's move on to the next question. But before that, let's see who has answered the question correctly. So Dolly, Janni, Megha, Vishal, everybody has answered the question correctly. That is option C, ecosystem. Well done guys. Let's move on to the next question, and the next question is on the Financial Inclusion Index 2022. So quickly tell me that what exactly is the new score of India in the Financial Inclusion Index. This is the index which is being released by the Reserve Bank of India, and this is an annual index which is being released by the Reserve Bank of India. So quickly tell me that what exactly is the new score of India. As you can see here that India's Financial Inclusion Index has shown an improvement to 56.4 from dash in 2021. So last year India का score क्या था? It was 53.9, 54.9, 52.9, 51.9 or the 51.5. What exactly is the right answer to this question? So here people are opting the option number B, some are going with option number B, that is 54.9. So guys, here the right answer is basically option A, that is 53.9. As you can see here that India's score has increased from 53.9 in March 2021 to 56.4 in March 2022. और यहाँ पर सबसे important चीज ये है कि as per the Financial Inclusion Index which is being released recently, that is for the year 2022, India has basically shown improvement, growth in all the parameters, that is access, usage and quality, which are the three parameters of the Financial Inclusion Index. और इन सभी इंडेक्स के जो पैरामीटर्स हैं वहां पर उन्होंने इंप्रूवमेंट शो की है. very important point that you should remember. There can be a question on these three parameters as well. ठीक है जी, I hope this is clear. Let's move on to the next question, and the next question is, Government of India has recently made e-invoicing mandatory for businesses with an aggregate turnover of dash from October 1, 2022. So here two important things are there. First of all, that e-invoicing has been become mandatory. तो वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कौन सा बिजनेसेस के लिए, बेसिकली उसको डिफाइन किया है कि किसके लिए होगी वो, विद द हेल्प ऑफ द टर्नओवर, कि कितना टर्नओवर उसका होना चाहिए कि वो उसके लिए एप्लीकेबल होगा. एंड द सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज the date from which it will be implemented. That is very much important from the exam point of view. तो यहां पर आती है डेट आपकी October 1, 2022. ठीक है जी. So quickly tell me what is the right answer to this question, and here I am getting the right answers from the people here, and that is option number E, that is 10 crores. So everybody has answered the question correctly. Music, Janani, Rathod, Vishal, Amit, Megha, everybody has answered the question correctly. That is option 5. That is 10 crores. ठीक है जी, very well done. Let's move on to the next question, and the next question is, SEBI ने यहाँ पर recently restructure किया है अपनी Market Data Advisory Committee को, which now will have dash members. See, earlier the number of members was different, and now after the restructuring of this particular committee, they have a different number in this particular committee. So what exactly is the actual number of people which will be there now in this particular committee? That is for the Market Data Advisory Committee. A very important part. See, whenever you find such kind of committees, what you are required to remember, first of all, number of members कितने हैं,
ठीक है जी. एंड द सेकंड थिंग इज दैट व्हाट एग्जैक्टली इज द हु एग्जैक्टली इज द चेयरमैन. चेयरमैन कौन होगा उस कमेटी का? तो जब मैं चेयरमैन की बात करूं तो इस कमेटी के जो नए चेयरमैन है दैट इज एस साहू, हु इज द फॉर्मर चेयरपर्सन ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया. ठीक है जी. तो यहां पर ऐसी सी इंफॉर्मेशन आपको याद रखना जरूरी है. एंड व्हेन आई टॉक अबाउट दैट व्हाट एग्जैक्टली इज द न्यू नंबर हियर, सो द न्यू नंबर इज बेसिकली 20. तो जिन स्टूडेंट्स ने यहां पर आंसर किया है इसका 15, गाइस 15 इज नॉट द राइट आंसर. द राइट आंसर इज बेसिकली 20. सो दिस कमिटी इज बेसिकली गोइंग टू रिकमेंड पॉलिसी मेजर्स पर्टेनिंग टू सिक्योरिटी, मार्केट डेटा, एक्सेस एंड प्राइवेसी. तो जो हमारा मार्केट डेटा है उसकी एक्सेसिबिलिटी और प्राइवेसी को और ज्यादा बेहतर करने के लिए इस पर्टिकुलर कमेटी को यहां पर लॉन्च किया गया था. एंड दैट्स व्हाई द न्यू नंबर इज बेसिकली 20 मेंबर्स. अर्लियर देयर वर 21 मेंबर्स इन दिस पर्टिकुलर कमेटी एंड द चेयरमैन इज obviously that is S Sahu. ठीक है जी. I hope this is clear to all of you guys. Very well done. All of you have answered the question correctly. Let's move on to the next question. So the next question is, as per the recent data released by the CAG, इंडिया का फिस्कल डेफिसिट जो है फॉर द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ फिस्कल ईयर 2023 स्टैंड्स एट. तो बेसिकली इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको बस इतना बताना है कि इंडिया का जो फिस्कल डेफिसिट है वो कितना था. Guys, fiscal deficit क्या है? The additional value, that is when the expenditure of the government basically exceeds when expenditure of the government exceeds its revenue, it is basically called, that additional value is called the fiscal deficit. तो इंडिया का जो fiscal deficit है for the first quarter for the fiscal year 2023, what exactly it is? Quickly tell me the right answer in the comment section to the question number 7. So guys, what is the right answer to the question number 7? So absolutely right, the right answer is 3.52 lakh crores. Very well done guys. The 3.52 lakh crore is basically the India's fiscal deficit for the first quarter. और यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो टारगेट है इंडिया का, सी ये तो बात हुई सिर्फ क्वार्टर वाइज, बट हम जब बात करते हैं ओवरऑल टारगेट की तो फिस्कल ईयर 2023 के लिए इंडिया का जो टारगेट है इट इज बेसिकली 16.6 लाख करोड़. दैट इज 6.4% ऑफ द इंडिया जीडीपी, जो कि यहां पर बजट के अंदर भी और इकोनॉमिक सर्वे के अंदर भी जिसको मेंशन किया गया है. एंड दैट इज व्हाट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. एंड द सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू शुड रिमेंबर फ्रॉम हियर इज दैट व्हाट एग्जैक्टली इज इंडियाज ग्रोथ रेट. ठीक है, जो इंडियन इकोनॉमी की जो ग्रोथ रेट है इट इज बेसिकली एक्सपेक्टेड 7.2% ईयर ऑन ईयर बेसिस इन द फिस्कल ईयर 2023. सो हियर मनप्रीत, डॉली, अंशु, मनप्रीत, everybody has answered the question correctly. That is 3.52 lakh crores. Let's move on to the next question. So now you are required to tell me that the name of the person who has been appointed as the World Bank Country Director for India. So guys, what is the right answer here? The very first thing that I'm gonna hint here that the person who has become the World Bank Country Director for India is basically has replaced Junaid कमल अहमद. सो बेसिकली यहां पर आपका एक ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है कि ऑप्शन बी तो राइट आंसर नहीं है. ठीक है, अब क्विकली टेल मी दैट व्हाट एग्जैक्टली इज द राइट आंसर टू द क्वेश्चन नंबर 8. So here I am getting the right answers. People are saying Auguste is the right answer, guys. Absolutely right. Auguste Tano Kome. So he is basically the person who was earlier the country director for the country Turkey, and now he has been appointed as the World Bank's country director for India. ठीक है, he is a person from Cote d'Ivoire, the name of the country from where he belongs to, and he has replaced the Junaid Kamal Ahmed. Well done, guys. All of you have answered the question correctly. Let's move on to the next question, and the next question is on Insurance Dekho. So Insurance Dekho एक कंपनी है जिसने रिसेंटली पार्टनर किया है वन ऑफ द इंश्योरेंस कंपनीज टू ऑफर हेल्थ कवर टू डॉग्स. सो बेसिकली इस कंपनी ने क्या किया है, एक इंश्योरेंस कंपनी के साथ मिलके हेल्थ कवर लॉन्च किया है दैट इज फॉर डॉग्स. एंड यू आर जस्ट रिक्वायर्ड टू टेल मी द नेम ऑफ द कंपनी जिसके साथ ये पार्टनरशिप की है. सी व्हेनेवर यू फाइंड द टर्म दैट इज पार्टनरशिप, एमओयू, तो यहां पर ऐसी न्यूज आर्टिकल में आपको क्या करना है, हमेशा आपको याद रखना है कि पार्टीज का नाम क्या है जिनके बीच में पार्टनरशिप हुई है. एंड द सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट व्हाट एग्जैक्टली इज द एम ऑफ दैट पर्टिकुलर पार्ट. ठीक है, एम क्या है उस पार्टनरशिप का, तो यहां पर एम तो ऑलरेडी आपको गिवन है दैट इज टू ऑफर हेल्थ कवर टू द डॉग्स. एंड व्हेन आई टॉक अबाउट द नेम ऑफ द पार्टी ऑफ द वन पार्ट इज द इंश्योरेंस देखो कंपनी एंड द सेकंड वन इज द फ्यूचर जनरली व्हिच हैज बेसिकली पार्टनर्ड विद द इंश्योरेंस देखो टू ऑफर हेल्थ कवर टू द डॉग्स. सो वेल डन. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द बैंक ऑफ बड़ौदा. सो बैंक ऑफ बड़ौदा ने रिसेंटली अप्रूव किया है कि हम डाइवर्स करेंगे अपने शेयर होल्डिंग को इन इट्स सब्सिडियरी इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड. सो बैंक ऑफ बड़ौदा जिसके एमडी एंड सीईओ हैं संजीव चड्ढा जी. ठीक है जी, संजीव चड्ढा जी. तो whenever you are finding such kind of banks in the news recently, what you are required to do, you are always required to remember कि उसके एमडी एंड सीईओ कौन है, जो हमने ऑलरेडी कर लिया है संजीव चड्ढा जी, एंड उसकी टैगलाइन क्या है. सो क्विकली टेल मी
that first of all, that what exactly is the right answer to this question? So absolutely right guys, the right answer is 12.5%. all of you have answered the question correctly. अब मुझे जल्दी जल्दी बता दीजिए कि टैगलाइन क्या है बैंक ऑफ बड़ौदा की. What is the tagline of Bank of Baroda? See, MD and CEO is Sanjeev Chadha. What is the tagline of Bank of Baroda? It is basically India's international bank. ठीक है जी. So this is basically the tagline of the Bank of Baroda that you should remember from the exam point of view. Let's move on to the next question. So guys, here's the next question. Rupee has recently partnered with which of the following banks to offer paperless loans for the used cars? तो यूज्ड कार्स के लिए पेपरलेस लोन्स यहां पर ऑफर किए हैं. इन विद विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स रूपी हैज पार्टनर्ड इन ऑर्डर टू ऑफर दीज पेपरलेस लोन्स फॉर द यूज्ड कार्स? लेट्स सी हु विल आंसर द क्वेश्चन करेक्टली हियर. So well done Manpreet and Dolly, you have told me the right answer about the tagline of the bank, that is Bank of Baroda. And now all of you are requested to answer the question to the question number 11. And here I am getting the right answer. Sadhana and Manpreet is saying that IndusInd Bank is the right answer. Absolutely guys, you guys are rocking today. The right answer to the question is option D, that is IndusInd Bank. So IndusInd Bank is the right answer to the question. Now quickly tell me that what exactly is the theme of the World Lung Cancer Day 2022? See guys, we all know that recently on August 1st, we have celebrated the World Lung Cancer Day to raise awareness about the lung cancer across the world. But what exactly was the theme? See, whenever you are finding a question from the important days के ऊपर कभी भी आपको कोई question दिखता है, आपको दो चीजें करनी है. First of all, the date on which that particular day is being celebrated, and the second important thing is the theme. तो यहाँ पर जब मैं डेट की बात करूं तो it was 1st August. ठीक है जी. और जब हम बात करते हैं थीम की, तो एब्सोल्युटली राइट गाइस, द थीम इज क्लोज द केयर गैप. एब्सोल्युटली राइट, ऑल ऑफ यू हैव आंसर्ड द क्वेश्चन करेक्टली. दैट इज ऑप्शन सी, क्लोज द केयर गैप. तो इसी तरीके से आपको प्रिपरेशन करते रहनी है, आंसर्स देते रहना है मुझे इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. एंड नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. व्हाई? बिकॉज हियर kindly see the first two words of this particular question that states world's largest. तो जब भी आपको इसी तरीके का कोई वर्ड दिखता है, world's largest, smallest, India's largest, smallest, tallest, तो ऐसी चीजें आपको हमेशा से इंपॉर्टेंट हो जाती हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज दे अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ द एग्जामिनर एंड दैट इज द रीजन दैट दे पुट सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस इन द एग्जाम. तो यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन ये है कि जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा सोलर प्लांट है, फ्लोटिंग सोलर प्लांट, जिसको हम बिल्ड कर रहे हैं मध्य प्रदेश के अंदर, तो क्वेश्चन बेसिकली ये है कि सी ऑल द इंपॉर्टेंट थिंग्स हैव बीन मेंशन्ड टू यू, बट द क्वेश्चन इज दैट कि ये जो हमारा सोलर प्लांट है ये कौन सी रिवर के ऊपर बनाया जा रहा है. इज इट नर्मदा रिवर और चंबल रिवर, बेतवा रिवर, सोन रिवर और तापी रिवर? गाइस, व्हाट एग्जैक्टली इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन? क्विकली टेल मी इन द कमेंट सेक्शन the name of the river on which this particular part will be launched. Let's see who will answer the question correctly here. Absolutely right guys, the right answer to the question is option A, that is Narmada river. और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारा फ्लोटिंग सोलर प्लांट है, इट विल बी बिल्ट ऑन द ओमकारेश्वर डैम. ठीक है जी, जो कि इट इज इन द खंडवा. एंड गाइस, इट एस्टिमेटेड कॉस्ट जो है उसकी दैट इज बेसिकली ₹3,000 करोड़. ठीक है जी, आई होप दिस इज क्लियर. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन दैट इंडिया ने रिसेंटली कौन सी कंट्री के साथ साइन अप किया है. ठीक है, द रेडियो टेक्निकल सिस्टम्स ऑफ विच कंट्री हैज साइंड अ डील विद एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया टू सप्लाई रेडियो इक्विपमेंट्स फॉर 24 एयरपोर्ट्स इन द इंडिया. तो इंडिया के अंदर रेडियो इक्विपमेंट्स को बेसिकली एक्सपोर्ट करने के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कौन से कंट्री के रेडियो टेक्निकल सिस्टम्स के साथ यहां पर एमओयू साइन किया है? एंड एब्सोल्युटली राइट गाइस, द राइट आंसर टू द क्वेश्चन इज रशिया. सो रशिया इज द राइट आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, विद व्हिच द रेडियो टेक्निकल सिस्टम ऑफ रशिया हैज बेसिकली साइंड अ डील विद द एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया. अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. सो here Ayamala, Bitu, Rathod, Music, City, Anshu, Amanpreet, everybody has answered the question correctly. Well done guys. Let's move on to the next question. Next question, which of the following entity has eased the norms allowing insurers to purchase additional perpetual bonds which are issued by the banks and to participate in the public listing of high yielding InvITs, that is investment trust. तो बेसिकली आपको मुझे बताना है कि इसमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने कि ये नॉर्म्स जो हैं इसको यहां पर ईज डाउन किया है. ठीक है, व्हाट एग्जैक्टली इज द नेम? सी, वन थिंग दैट आई कैन टेल यू, वन हिंट दैट आई कैन गिव यू, दैट द हेड ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन इज बेसिकली देवाशीष पांडा.
that is the chairman of that particular organization, which has eased down the norms allowing insurers to purchase additional perpetual bonds. It is basically Devashish Panda. And here people are saying that SEBI is the right answer to this question, guys. How can you do that? I have already told you the name of the chairman of that particular organization, and see, it is basically related to the bonds. So here the right answer is not SEBI, it is basically IRDAI, that is Insurance Regulatory Development Authority of India. So all those people who have answered the question SEBI, guys, kindly note down that this particular part is not SEBI, it is IRDAI. ठीक है जी, IRDAI is the right answer to this particular question because it has done this. और यहाँ पर सी ध्यान से देखिए, यहाँ पर बात हो रही है इंश्योरर्स की, दैट इज इट इज रिलेटेड टू द इंश्योरेंस पार्ट, और ये इंश्योरेंस के लिए कौन आपके रूल्स निकालते हैं, दैट इज इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसके चेयरमैन है देवाशीष पांडा. सो दैट्स हाउ यू आर रियली रिक्वायर्ड टू रिमेंबर फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पार्ट. आई एम मार्किंग द स्टार हियर क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन का आंसर गलत दिया है. ठीक है जी, आई होप दिस इज क्लियर गाइस. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. हियर यू रिक्वायर्ड टू टेल मी द नेम ऑफ द ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म व्हिच हैज पार्टनर्ड विद इंडियन रेलवेज to boost delivery of the packages by transporting packages in more than 110 intercity routes. तो कौन सी वो e-commerce मेजर कंपनी है जिसने कि रिसेंटली इंडियन रेलवेज के साथ ये MOU साइन किया है to boost the delivery of packages? And guys, here the right answer to this particular question is option B, that is Amazon India. So guys, in which so here it is basically Amazon India, which is the right answer to this particular question. Absolutely right. Let's move on to the next question, and the next question is, as per the recently released Fortune Global 500 list 2022, LIC की rank क्या थी? What exactly was the LIC rank as per the recently released Fortune Global 500 list? See, let me tell you the very first important thing, that this particular list was being topped by, सी जब भी ऐसी कोई लिस्ट आती है तो आपको पता चलना चाहिए कि टॉप किसने किया है, इंडिया की रैंक क्या है, वर्स्ट परफॉर्मर क्या है. व्हेन आई टॉक अबाउट द टॉप, कि टॉप किसने किया है, ठीक है जी, इट हैज बीन टॉप्ड बाय वॉलमार्ट. ठीक है, इट हैज बीन टॉप्ड बाय वॉलमार्ट. एंड व्हेन आई टॉक अबाउट द रैंक ऑफ LIC, इट वाज बेसिकली 98th. सो LIC इज द ओनली इंडियन कंपनी टू फाइंड अ प्लेस इन द टॉप 100 अंडर द Fortune Global 500 list. और इसके अंदर जब हम रिलायंस की बात करें, that was on the 104th position in this particular list, which is topped by Walmart. ठीक है, that we have already covered. So well done, all of you have answered the question correctly. That is 98th. So 98th is the right answer to this question. ठीक है जी. Now you are required to tell me the name of the person who has recently been crowned as the Mrs. India World 2022-2023. ठीक है जी, तो यहाँ पर Mrs. India World 2022-2023 competition हुआ था, उसके विनर कौन थे? That is what you are required to tell me. Who was the person who has been crowned as the Mrs. India World 2022-2023? So these kind of questions we have already seen in the previous year questions, and that is why such kind of questions are really very important for your GA section of the exam. And now quickly tell me what is the right answer. So most of the people are opting the option number B, that is Mrs. Sargam Kaushal, and guys, that is absolutely right. Mrs. Sargam Kaushal has been crowned as the Mrs. India World 2022-2023. That is the right answer to this particular question. ठीक है जी. Moving on to the next question. So now you are required to tell me the name of the organization or the ministry which has come up with a scheme, that is the State University Research Excellence Scheme. As the name suggests, this SURE scheme is basically to augment research and development activities in the state colleges and the universities, as its name suggests, State University Research Excellence Scheme. ठीक है जी, तो स्टेट यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के अंदर हमारी जो रिसर्च है उसको और ज़्यादा बेहतर किया जाए, इसके लिए ये श्योर स्कीम रिसेंटली लॉन्च की है. और आपको मुझे बताना है कि बेसिकली ये कौन सी मिनिस्ट्री है या ऑर्गेनाइजेशन है जिसने इस पर्टिकुलर स्कीम को लॉन्च किया है. एंड गाइस, हियर एब्सोल्युटली राइट, द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी. तो ये स्कीम ऑब्वियसली बिल्कुल सही का मेघा अरुण्य, दैट इट इज बेसिकली ऑफ SERB, दैट इज साइंस इंजीनियरिंग एंड रिसर्च बोर्ड, which works under the Ministry of Science and Technology. This SERB is a statutory body under the Ministry of Science and Technology which has launched the scheme, that is SURE. और यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता दूं कि इसका जो एक्रोनिम है, that is SURE, इसकी फुल फॉर्म याद रखिएगा. एंड दिस इज वेरी सिंपल, दैट इज स्टेट यूनिवर्सिटी रिसर्च एक्सेलेंस स्कीम. ठीक है जी, आई होप दिस इज क्लियर. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी हैज रिसेंटली partnered with which of the following entities to accredit and rate the health mental information system and laboratory information management system solutions? So quickly tell me that what is the right answer to this question. You are just required to tell me
कि किसके साथ, इसमें से कौन सी एंटिटी है जिसके साथ नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने पार्टनरशिप की है। एंड गाइस हियर द राइट आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। तो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के साथ ये पार्टनरशिप की है टू एक्रेडिट एंड रेट द health management information system and LMIS solutions that have been integrated with the Ayushman Bharat Digital Mission, a very important mission which was launched during the budget last year। ठीक है जी, तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द रिसेंटली, आपको मुझे बताने की स्टेट का नाम जहां पर एक पहला फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड अर्बन एनिमल रेस्क्यू सेंटर को लॉन्च किया है विच इज बीन सेटअप एट द इनसाइड ऑफ द गिंडी नेशनल पार्क। तो ये नेशनल पार्क कौन सी स्टेट के अंदर है, दैट इज व्हाट यू आर रिक्वायर्ड टू टेल मी हियर। एंड सच काइंड ऑफ क्वेश्चन वाज बीन देयर इन द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फेज 1 एग्जाम फॉर ईयर 2021, and that is why such kind of questions are really very important. So whenever you find such kind of national parks, atomic power plants in news, always remember कि वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, कौन से स्टेट के अंदर है। ठीक है जी, तो एवरीबॉडी हैज आंसर्ड द क्वेश्चन करेक्टली, दैट इज तमिलनाडु। वेल डन गाइस, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन यू आर रिक्वायर्ड टू टेल मी कि इनमें से कौन से इंस्टीट्यूट ने, ठीक है जी, रिसेंटली टू डेवलप एंटरप्रेन्योरल स्किल्स एंड create sustainable livelihood opportunities, Hindustan Unilever Limited has signed an MOU with which one of the following entities? तो यहाँ पर I always tell you that whenever there is an MOU, there are the name of party that first of all you are required to cover. First party is Hindustan Unilever Limited. Now the second party, that is what you are required to tell me in the comment section कि second party का नाम क्या है जिसने इसको launch किया है। And guys, here the right answer is NIESBUD, which basically stands for the National Institute for the Entrepreneurship and Small Business Development. So as its name suggests, National Institute for Entrepreneurship and Small Business Development, it basically works under the Ministry of Skill Development and ठीक है जी, तो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट के अंदर ये पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट काम करता है। एंड दिस इज व्हाट यू आर ऑलवेज रिक्वायर्ड टू रिमेंबर व्हेनेवर यू फाइंड सच काइंड ऑफ पार्ट, ऑलवेज रिमेंबर कि कौन से मिनिस्ट्री के अंदर है, क्योंकि एग्जाम के अंदर देयर इज अ प्रोबेबिलिटी दैट इट कैन बी आस्क्ड इन द एग्जाम। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द थर्ड ब्रीफ ऑफ द ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप ऑन फूड, एनर्जी एंड फाइनेंस। तो यहां पर क्वेश्चन ये है कि as per this particular report, 57% of nearly $1 trillion of the global investment in energy transition technologies was deployed in 5 geographies. तो आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सी वो कंट्री है जो उस 5 geographies का पार्ट नहीं है, कौन सी वो कंट्री है जो कि इस पर्टिकुलर ग्रुप का पार्ट नहीं है, जिसके लिए इस पर्टिकुलर रिपोर्ट के अंदर इन्होंने कहा है कि 57% ऑफ द इन्वेस्टमेंट इन द एनर्जी ट्रांजिशन इट इज डिप्लॉयड इन दीज 5 ज्योग्राफीज। एंड गाइस हियर द राइट आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज बेसिकली ऑप्शन बी, दैट इज रशिया। तो रशिया है इस क्वेश्चन का सही आंसर। जब हम बात करते हैं कि 5 ज्योग्राफीज कौन सी हैं, इफ यू रिमेंबर दैट व्हाट एग्जैक्टली दीज 5 ज्योग्राफीज आर, यू आर रिक्वायर्ड टू रिमेंबर द नेम ऑफ देम, दैट इज चाइना, इंडिया, जापान, यूएस एंड यूरोप। तो ये 5 ज्योग्राफी हैं बेसिकली जहां पर ये पर्टिकुलर जो ट्रांजिशन, एनर्जी ट्रांजिशन इन्वेस्टमेंट है 57% ऑफ द ओवरऑल वर्ल्ड इज बीइंग डिप्लॉयड। ठीक है जी, सो हियर मेघा, राठौड़, अंशु, के सोल, आयमला, मनप्रीत, एवरीबॉडी हैज आंसर्ड द क्वेश्चन करेक्टली, दैट इज ऑप्शन बी, रशिया। So now let's move on to the next question. Now you are required to tell me the name of the Indian bank, the mortgage lender which has raised $1.1 billion social loan through the external commercial borrowing for financing affordable housings in India. तो इंडिया के अंदर अफोर्डेबल हाउसिंग को फाइनेंस करने के लिए इसमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने कि $1.1 बिलियन रेज किया है through the external commercial borrowing? So guys, what is the right answer? Is it State Bank of India, Union Bank of India, Bajaj Finserv, HDFC Limited or ICICI Bank? See, such kind of banking news are always there and they are being asked in the exam and you cannot ignore such kind of news articles. ठीक है जी, तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं आंसर की, the right answer is HDFC Limited. ठीक है, तो HDFC is basically the right answer to this particular question. Now quickly tell me the name of the country which has recently launched its first moon mission that is named as Dhanuri. तो यहाँ पर दो चीजें इंपॉर्टेंट है आपकी। फर्स्ट ऑफ ऑल कि फर्स्ट मून मिशन है एक कंट्री का, उस कंट्री का नाम क्या है, दूसरा उस मिशन का नाम क्या है, दैट इज धनुरी। तो धनुरी मिशन ये कौन सी कंट्री का है, दैट इज व्हाट यू आर रिक्वायर्ड टू रिमेंबर। So guys quickly tell me the what is the right answer. So Shubhi is saying that best questions ever ऐसे ही फ्रेम होते हैं
पेपर के अंदर. So guys, that is why really we are coming up with such kind of questions, such kind of sessions, so that you can definitely revise all such kind of things और आपकी प्रैक्टिस पहले से ही हो जाए. ठीक है जी. तो when I talk about the right answer to this question, the right answer is साउथ कोरिया. तो साउथ कोरिया का ये बेसिकली पहला ऐसा मून मिशन है. और यहां पर मैं आपको बता दूं कि जब भी आपको कोई कंट्री ऐसे दिखती है, फॉरेन कंट्री, यू ऑलवेज यू आर रिक्वायर्ड टू रिमेंबर कि उसकी कैपिटल क्या है, उसकी करेंसी क्या है और उसके प्रेसिडेंट या फिर प्राइम मिनिस्टर कौन है. ये सब चीजें आपको याद रखनी चाहिए. ठीक है, बिकॉज क्वेश्चंस ऑन सच काइंड ऑफ लाइंस आर आल्सो बीइंग आस्क्ड इन द एग्जाम. ठीक है. सो when I talk about the capital is basically Seoul of South Korea. ठीक है, I hope this is clear guys. Let's move on to the next question, and the next question is on the पंचामृत योजना. तो पंचामृत योजना recently फार्मर्स की इनकम को डबल करने के लिए वन ऑफ द स्टेट हैज लॉन्च दिस पर्टिकुलर पार्ट. सो क्विकली टेल मी दैट व्हाट एग्जैक्टली इज द नेम ऑफ द स्टेट व्हिच हैज कम अप विद दिस पंचामृत योजना. तो मैं आपको दोबारा से हिंट दे देता हूं कि उसके जो चीफ मिनिस्टर हैं दैट इज बेसिकली योगी आदित्यनाथ जी. एंड एब्सोल्युटली राइट गाइस, द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज उत्तर प्रदेश. तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने लॉन्च की है पंचामृत योजना, जिसकी हेल्प से दे आर बेसिकली गोइंग टू बेनिफिट द फार्मर्स एंड दे आर टारगेटिंग डबलिंग द फार्मर्स इनकम with this help of this particular yojana. Very well done guys. So everybody have answered the question correctly. That is Uttar Pradesh. Tarun, Pavan, Amala, Anshu, Manpreet, Sadhana. So guys, well done guys, well done. And now let's move on to the next question. And now you are going to tell me the name of the first city in India. India का वो पहला first city जिसको मिला है Environmental Insight Explorer data from the Google. ठीक है जी. तो Google basically Google का ये initiative है, that is of Environmental Insight Explorer. And here you are required to tell me the name of the first Indian city जिसको कि ये particular data मिला है. And guys, here to this particular question, the right answer is Aurangabad, Maharashtra, which has become the first city. Okay, so Vishal is saying that my city, that is Aurangabad. Absolutely right, Vishal. The right answer is Aurangabad, Maharashtra. So your city has basically become the first city in India to get environmental insights Explorer data from the Google. ठीक है जी. Now let's move on to the very important part of this particular session guys. That is, we all know that recently there was a monetary policy meet. तो monetary policy meet जो भी recently हुई है, आपको मुझे बताना है कि ये जो current repo rate है as per the recently held monetary policy meeting वो क्या है. What is the right answer to this part? Current repo rate as per the Reserve Bank of India. And guys, here the right answer to this question is absolutely right guys, option D, that is 5.4%. तो 5.4% is the right answer to this particular question. ठीक है, तो हमें पता है कि repo rate तो ये है. Now quickly tell me that standard deposit facility rate, what exactly this particular rate as per the recently held RBI monetary policy meet, what exactly is the SDFR? Let's see who will answer the question correctly guys. What is the SDFR rate as per the recently held monetary policy meet? Absolutely right guys, the right answer to this particular question is 5.15%. ठीक है जी. और जब हम बात करते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट की, इट वाज 5.65%. तो यहां पर तो हो गए आपके ये रेट्स जो दैट इज बेसिकली वेरी इंपॉर्टेंट टू बी कवर्ड. नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट आपको ये भी याद रखना है कि सीआरआर क्या है और एसएलआर क्या है. ठीक है, तो सीआरआर की बात करें तो इट इज बेसिकली 4.5% एंड व्हेन आई टॉक अबाउट द एसएलआर इट इज बेसिकली 18%. सो वी हैव कवर्ड ऑल द इंपॉर्टेंट डायमेंशंस ऑफ दिस पर्टिकुलर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मॉनेटरी पॉलिसी मीट व्हिच इज हेल्ड रिसेंटली. तो हमने बेसिकली देखा कि रेपो रेट है that is 5.4%, SDFR is 5.15%, marginal standing facility 5.65%, CRR 4.5% and SLR that is 18%. So well done guys, you guys are really rocking today. आप सभी ने दिया इस क्वेश्चन का सही आंसर. Let's move on to the next question, and the next question is basically about the 15 member foreign portfolio investment advisory committee. ठीक है जी, जिसको कि कॉन्स्टिट्यूट किया है सेबी ने. तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए क्या है कि नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जिसने इसको कॉन्स्टिट्यूट किया है. सेकंड थिंग, नंबर ऑफ मेंबर्स क्या हैं. थर्ड थिंग, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी कमेटी, उसका नाम, कमेटी का नाम. एंड द फोर्थ इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट इज बीइंग आस्क्ड इन द क्वेश्चन, दैट इज चेयरमैन. ठीक है जी. तो यहां पर आप मुझे जल्दी जल्दी बताइए गाइस कि व्हाट एग्जैक्टली इज द नेम ऑफ द चेयरमैन ऑफ दिस पर्टिकुलर committee which is being constituted by the Securities Exchange Board of India. ठीक है जी. So quickly tell me what is the right answer guys. Is it Urjit Patel, as KV Subramaniam, Ashwani Bhatia, KV Kamath or Madhabi Puri Booch? What is the right answer to this question? Question number 29, 15 member foreign portfolio investment committee which is being constituted by the SEBI, and guys here the right answer is KV Subramaniam. ठीक है जी. So KV Subramaniam is the right answer to this particular question. So everybody's answered the question correctly.
सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन इंडिया की उड़ान प्रोजेक्ट, ठीक है जी। तो एज वी ऑल नो दैट वी आर सेलिब्रेटिंग आजादी का अमृत महोत्सव, 75 इयर्स ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस, और यहाँ पर इंडिया के 75 इयर्स को यहाँ पर कोमेमोरेट करने के लिए एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, दैट इज इंडिया की उड़ान। और आपको मुझे बताना है कि बेसिकली क्या है उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम जिसका ये प्रोजेक्ट है, दैट इज इंडिया की उड़ान। और एंड गाइस हियर द राइट आंसर टू द क्वेश्चन इज बेसिकली गूगल। सो गूगल इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। तो गूगल ने बेसिकली इसको लॉन्च किया है एंड द नेम ऑफ द प्रोजेक्ट इज इंडिया की उड़ान, ठीक है जी, वेल डन। सभी ने दिया है इस क्वेश्चन का सही आंसर, म्यूजिक द सिटी, साधना, अंशु, नीलेश, Dolly, Megha, so everybody is talking today. Everybody has answered the question correctly. That is Google. ठीक है जी, moving on to the next question. So now you are required to tell me, IIM Kozhikode ने recently to boost startups in the maritime sector, इसमें से कौन सी organization के साथ ये particular MOU sign किया है? So basically one of the parties IIM Kozhikode, aim क्या है to boost startups in the maritime sector, और तो दूसरी जो पार्टी है जिसके साथ ये MOU sign किया है, what exactly is the name of that particular organization? And that is basically option D, that is Cochin Shipyard Limited. So guys, Cochin Shipyard Limited is the right answer to this particular question. And here IIM Kozhikode, Cochin Shipyard Limited has launched an MOU under which they are going to boost the startups in the maritime sector. Absolutely right. Moving on to the next question, and the next question is Prasar Bharati ने recently, once again there is a question on the partnership. तो partnership किया है इसमें से कौन सी इंस्टीट्यूट के साथ to develop next generation broadcast solution and roadmap for the digital terrestrial broadcasting. तो ये जो डिजिटल टेरेस्ट्रियल ब्रॉडकास्टिंग है इसके लिए यहाँ पर एक MOU साइन हुआ है प्रसार भारती का, और किसके साथ हुआ है, दैट इज व्हाट यू आर रिक्वायर्ड टू टेल मी गाइस, एंड हियर द राइट आंसर इज IIT Kanpur. So IIT Kanpur has basically has launched this particular MOU, has partnered with the Prasar Bharati for the next generation broadcast solution. ठीक है जी, I hope this is clear guys. Let's move on to the next question. And the next question is, which of the following Indian Defence Forces has conducted exercise that is Skylight to test the resilience of satellite based system? तो ये जो हमारा resilience है सैटेलाइट बेस्ड सिस्टम की, इसके ऊपर एक एक्सरसाइज जिसका नाम है स्काईलाइट, जिसको यहाँ पर लॉन्च किया गया था। और आपको मुझे बताना है कि इसमें से कौन सी इंडिया की डिफेंस फोर्सेस एक्सरसाइज है जिसने कि इसको लॉन्च किया है। विच इंडियन डिफेंस फोर्स हैज बेसिकली कम अप विद दिस काइंड ऑफ एक्सरसाइज दैट इज स्काईलाइट? एंड हियर गाइस द राइट आंसर इज इंडियन आर्मी। एब्सोल्युटली राइट, इंडियन आर्मी इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पर जितनी भी एक्सरसाइजेस हैं आपको याद रहनी चाहिए कि एक्सरसाइज कौन सी थी, उसका नाम क्या है और कहाँ पर कंडक्ट की गई थी। एंड हियर इज द राइट आंसर इज इंडियन आर्मी, जिसने की लॉन्च की है Skylight. ठीक है, moving on to the next question. So the next question is, New Street Technologies has signed up with which of the following banks to facilitate micro lending operations management and tech services under the priority sector lending? So we all know what the priority sector lending. ठीक है जी, तो priority sector lending के लिए यहाँ पर New Street Technologies एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने इनमें से किसी एक बैंक के साथ MOU साइन किया है, ठीक है, और उसका एम क्या था, टू फैसिलिटेट माइक्रो लेंडिंग ऑपरेशंस मैनेजमेंट एंड टेक सर्विसेज, वो भी अंडर द प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग. एंड गाइस व्हेन आई टॉक अबाउट द राइट आंसर टू द क्वेश्चन नंबर 34, the right answer is Dhanlakshmi Bank. Absolutely right. So well done guys. Manpreet, Dolly have answered the question correctly here. Let's move on to the next question. So now the next question is, the first flight of Alaska Air from Mumbai to Dash has been inaugurated by Civil Aviation Minister. ठीक है जी, आपको मुझे बताना है कि बेसिकली क्या है इस पर्टिकुलर पार्ट का राइट आंसर. सो बेसिकली गाइस इट इज नॉट अलास्का एयर, इट इज आकाश एयर. ठीक है जी, आई थिंक इट इज बीन रॉन्गली मेंशन्ड हियर. तो यहाँ पर आपको मुझे बताना है कि मुंबई से लेके कहाँ तक की ये जो फ्लाइट है जिसको रिसेंटली लॉन्च किया था हमारे सिविल एविएशन मिनिस्टर ने. एंड गाइस हियर द राइट आंसर टू दिस पार्ट इज ऑप्शन बी, दैट इज अहमदाबाद. ठीक है, अहमदाबाद इन गुजरात, दैट इज फ्रॉम मुंबई महाराष्ट्र टू अहमदाबाद गुजरात. दिस पर्टिकुलर of a first flight has been launched. ठीक है, I hope this is clear guys. Very well done. Let's move on to the next question. So the next question is, which of the following Indian Defence Forces has launched हिम ड्रोन अथॉन प्रोग्राम अलॉन्ग विद द ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया? तो यहाँ पर इसमें से एक हमारे इंडियन डिफेंस फोर्स है जिसने ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर एक प्रोग्राम लॉन्च किया है. व्हाट इज द नेम ऑफ दैट प्रोग्राम? दैट इज हिम ड्रोन अथॉन. ठीक है, तो आपको मुझे बताना है कि उसका नाम क्या है बेसिकली जिसने इसको लॉन्च किया है. विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन डिफेंस फोर्सेस हैज कम अप विद दिस काइंड ऑफ प्रोग्राम अलॉन्ग विद द ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया? एंड गाइस हियर द राइट आंसर इज इंडियन आर्मी. ठीक है जी, तो इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया इसको. क्वेश्चन नंबर 36, तो राइट आंसर इज इंडियन आर्मी. So everybody have answered the question correctly. That is Indian Army guys. Let's move on to the next question. So the next question is, Global Pay, which is a cross-border payment platform for the small to medium-sized businesses, has recently been launched by which of the following
एंटिटीज। तो इसमें से कौन सी वो एंटिटी है जिसने कि रिसेंटली ग्लोबल पे नाम का एक क्रॉस बॉर्डर पेमेंट प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है, और वो लॉन्च किसके लिए किया है? फॉर द स्मॉल टू मीडियम साइज बिजनेसेस। तो यहां पर ऐसे कभी भी कोई प्लेटफॉर्म का नाम आता है या फिर कोई एंटिटी का नाम आता है, तो आपको हमेशा याद रखना है कि उस पर्टिकुलर जो प्लेटफॉर्म है उसको लॉन्च किसके लिए किया गया है, और साथ ही साथ बेनिफिशियरी कौन है, दैट इज अ बेनिफिशियरी, उस प्लेटफॉर्म का नाम क्या है और उसको लॉन्च किया किसने है। एंड गाइस एब्सोल्युटली राइट, द राइट आंसर इज अमेरिकन एक्सप्रेस टू द ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 37, द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। वेल डन, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ यू आर रिक्वायर्ड टू टेल मी कि इसमें से कौन सा बैंक है जिसके साथ एसआरएम यूनिवर्सिटी विच इज इन द आंध्र प्रदेश, जिसने एक पैक्ट साइन किया है to lend up to 50 crores for the startups incubated in the university. See, we all know that government of India is basically promoting the startups. ठीक है, startups को promote किया जा रहा है, तो जब startups को हम promote कर रहे हैं तो उसके लिए funding की भी जरूरत पड़ेगी। तो SRM यूनिवर्सिटी जो है आंध्र प्रदेश की, उसने यहाँ पर एक बैंक के साथ MOU साइन किया है जिससे कि हम lend कर सकें उन startups को जो कि उस यूनिवर्सिटी के अंदर बन रहे हैं, और 50 करोड़ तक की उसकी फंडिंग दी जाएगी। एंड गाइस हियर द राइट आंसर इज इंडियन बैंक। ठीक है जी। So India Springboard Initiative, basically it is the name of the initiative which has been launched by the Indian Bank. ठीक है जी, very well done guys, all of you have answered the question correctly. Let's move on to the next question. And the next question, you are required to tell me the name of the Indian bank which has set up race as its goal of 2022. तो कौन सा वो बैंक है जिसने अपना गोल दैट इज रेस जिसको सेटअप किया है? इज इट SBI, UBI, इंडियन बैंक, कैनरा बैंक और पंजाब एंड सिंध बैंक? Question number 39. See guys, these are the important banking news which you are really required to remember from the exam point of view. इन्हीं के ऊपर यहाँ पर questions आते हैं एग्जाम के अंदर। And here guys, the right answer to the question is option B, that is Union Bank of India. ठीक है जी। So Kanishk is saying that sir must questions form किए हैं, so thank you Kanishk for the compliment here. So whole team is basically working on this particular part, so credit goes to the whole team. ठीक है। So now guys, when I talk about this particular race part, see race basically stands for grow RAM, that is agriculture MSME loans to improve asset quality, and see here C stands for CASA, that is current account and saving account deposits and increase earnings. तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि what exactly R, A, C and E stands for, and this can become a probable question in the exam. ठीक है जी। तो यहाँ पर right answer to the question is Union Bank of India. Let's move on to the next question, and guys here the next question is on basically the award. And whenever you find a question on the award, what you are required to remember, the name of the person who has been awarded, किसने award किया है, that is really very important. award का नाम क्या था ये भी आपको याद रखना जरूरी है। So here the award is basically Par Nagam दोस्तों award, which is basically highest civilian award which is being given in Ladakh. ठीक है, तो वो मिला किसको था? That is what the right answer to this particular question, that is what the demand of this particular question. Absolutely right guys, the right answer is Dalai Lama, and the name of that person is Tenzin Gyatso, who is the 14th Dalai Lama and who has been awarded with this particular award which is the highest civilian honor of Ladakh. ठीक है, so all such kind of things you are really required to remember from the exam point of view. Let's move on to the next question. And the next question, we all know that recently there was a presidential election as well as there was a vice president elections. तो आपको मुझे बताना है कि recently इनमें से कौन सा वो पर्सन है, पर्सनालिटी है जिन्होंने वाइस प्रेसिडेंट जो इंडिया के रिसेंटली बने हैं। So this particular person has basically replaced M. Venkaiah Naidu ji, who was earlier serving as the Vice President of India. Now guys, quickly tell me that what exactly is the right answer to this particular question here. That is the Vice President of India, who is basically the new Vice President of India. And absolutely right, the right answer is Jagdeep Dhankar ji, who is basically who has been recently appointed as elected as the Vice President of India. ठीक है जी, he has succeeded M. Venkaiah Naidu, that I have already told you about that. Moving on to the next question here, and the next question is, you are required to tell me the name of the person who has become the first woman Director General of CSIR. So whenever you find such kind of words, that is the first woman to get this particular achievement, first woman to take up that particular portfolio, these kind of things are really very important. For example, when I talk about the first tribal president of India, she is basically Mrs. Draupadi Murmu ji. ठीक है, so इसी तरीके से जो first women director है, Director General for the CSIR, that is Council of Scientific and Industrial Research. Guys, the right answer to this particular question is option B, that is Nalathambi Kalishalvi. Sorry for the wrong pronunciation guys. Here the right answer is option B. ठीक है,
So I hope that this is really very much clear to all of you. So these are the names that you should remember from the exam point of view. Now let's move on to the next question. And the next question, guys, you are required to tell me कि recently to encourage Indian smallholder farmers in harnessing climate carbon finance for the sustainable agroforestry national carbon finance platform. So all such kind of thing has been launched by इसको launch किसने किया है? You are required to tell me what is the right answer here. See, whenever such kind of initiative is being taken, and I am marking the star here because this is a very important question for the students who are working for the, who are basically aspiring to join officer as a NABARD and who are basically preparing for the NABARD grade A exam. ठीक है, तो NABARD grade A exam aspirants के लिए ये काफी important question है. And guys, here the right answer to this particular question is both option A and B, that is both TRIF and IntelCap. ठीक है, तो Transform Rural India Foundation along with IntelCap has basically come up with such kind of initiative to encourage the smallholder farmers in India. ठीक है जी. So here Bitupal, Manpreet, Anshu, Preeti, Sadhana, Megha, Manpreet, everybody has answered the question correctly. That is option D. Well done, guys. Now quickly tell me the name of the state which has come up with a scheme which is titled as Nethana Ku Bima. तो यहाँ पर एक इंश्योरेंस स्कीम लॉन्च की गई है और आपको मुझे बताना है कि इसमें से वो कौन सी स्टेट है जिसने इस स्कीम को लॉन्च किया है. इज इट केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और तेलंगाना? एंड गाइस, हियर the right answer to the question is option E, that is Telangana. So Telangana government has basically come up with such kind of scheme which is going to provide insurance coverages to the handloom and power loom weavers in the state. तो basically handloom और यहाँ पर power loom weavers के लिए इस particular चीज को लॉन्च किया गया है, स्कीम को लॉन्च किया गया है. ठीक है जी. आई होप दैट दिस इज वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू गाइस. सो वी आर बेसिकली राइट नाउ, अब थोड़ा सा हम अपनी स्पीड को इंक्रीज करते हैं जिससे कि और कम टाइम में हम इस पर्टिकुलर सेशन को फिनिश कर सकें. ठीक है. सो गाइस, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द डॉक्टर बी आर अंबेडकर कोनसीमा डिस्ट्रिक्ट. ठीक है जी. तो आपको मुझे बताना है कि रिसेंटली देयर वाज अ डिस्ट्रिक्ट व्हिच वाज टाइटल्ड एज कोनसीमा, जिसका नाम था कोनसीमा, उसको यहां पर रीनेम किया है एज अ डॉक्टर बी आर अंबेडकर कोनसीमा डिस्ट्रिक्ट. तो आपको मुझे बताना है बेसिकली कौन सी वो स्टेट है जहां पर ये पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट is basically located there. And guys, the right answer to the question is Andhra Pradesh. So Andhra Pradesh is the right answer to this question. Question number 45, right answer is option A. So now let's move on to the next question, and the next question is One Road One Week initiative. So One Road One Week initiative, basically this is an initiative of one of the following states or UTs which are being mentioned here. और उनका basically target क्या है? That is to repair one road every week. That is what exactly is the right name, the right this particular initiative. ठीक है. तो ये इनिशिएटिव है किसका? दैट इज व्हाट यू आर रिक्वायर्ड टू टेल मी कि कौन सी स्टेट है, यूटी है जिसने ये इनिशिएटिव लिया है. दैट इज व्हाट यू आर रिक्वायर्ड टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन गाइस. एंड गाइस, हियर द राइट आंसर टू द क्वेश्चन इज न्यू दिल्ली. सो न्यू दिल्ली का ये इनिशिएटिव है जिसने, दैट इज वन रोड वन वीक, अंडर विच दे आर गोइंग टू अंडरटेक रिपेयर एंड मेंटेनेंस वर्क ऑफ one road per week. ठीक है जी. A very good initiative from New Delhi here. Now let's move on to the next question. So the next question is on the National Handloom Day. तो National Handloom Day हम कौन से डे को सेलिब्रेट करते हैं across India? That is what you are required to tell me here. Is it August 7, August 9, August 3, August 10 or August 17? Guys, that is what you are required to tell me here. So absolutely right. The right answer is August 7, on which we basically celebrate the National Handloom Day every year. ठीक है जी. तो नेशनल हैंडलूम डे इज द राइट आंसर टू द क्वेश्चन. सो हियर करंट अफेयर्स ओशन इज सेइंग दैट नाइस क्वेश्चन. सो थैंक यू करंट अफेयर्स. सो नाउ लेट्स फोकस ऑन द question which is here guys on the screen, and the question is you are required to tell me the name of the state which has launched its own taxi service. तो यहाँ पर मैं आपको एक हिंट देना चाहता हूँ इस क्वेश्चन की. इन द प्रीवियस ईयर, इन द प्रीवियस सेशंस ऑफ दिस revision MCQs, we have covered this particular question, the name of the state which come up with its own internet service, and the name of that state particular was basically Kerala. तो इसी तरीके से जब हम बात करते हैं द स्टेट विच हैज लॉन्च्ड इट्स ओन टैक्सी सर्विस, द राइट आंसर टू द क्वेश्चन इज आल्सो केरला. सो केरला की ये जो इनिशिएटिव है दैट इज केरला सवारी. दैट इज व्हाट द नेम ऑफ द इनिशिएटिव ऑफ द केरला गवर्नमेंट व्हिच हैज कम अप विद दिस गवर्नमेंट्स ओन ई टैक्सी सर्विसेज. ठीक है. सो दिस इज द राइट आंसर गाइस. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इसरो ने रिसेंटली लॉन्च किया है अपना पहला 34 मीटर टॉल स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल. ठीक है. टू प्लेस एन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट. यू आर जस्ट रिक्वायर्ड टू टेल मी कि उसका नाम क्या है. इज इट सुरक्षा सत, कृषि सत, शिक्षा सत, आजादी सत और समर्थ सत? सी गाइस, अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट हियर. यहां पर मैं अगर आपको छोटी सी एक
hint देना चाहूंगा that we all know that we are basically commemorating 75 years of India's independence as आज़ादी का अमृत महोत्सव। तो इसी के जरिए यहाँ पर इसरो ने भी इसको आज़ादी से रिलेटेड ही नाम दिया है, एंड हियर द राइट आंसर इज आज़ादी सत। ठीक है, तो आप यहाँ पर इसकी टाइमलाइन को रेफरेंस दे सकते हैं कि इट इज बीइंग लॉन्च्ड इन द मंथ where we are going to celebrate the India's Independence Day, that is the 15th of August। तो यहाँ पर अगस्त के महीने में ये हुआ है, तो उनका जो उन्होंने नाम भी रखा है that is on आज़ादी, that is आज़ादी सत। ठीक है, that is what the right answer to the question। Now moving on to the last question of our today's session guys, and here the question is CRPF ने recently अपना 84th CRPF Establishment Day launch किया था, that is called the CRPF Raising Day। Now quickly tell me that what exactly is the right answer। See, Nilesh is saying ये तो wrong orbit में गया। See guys, always consider that what exactly the amount of efforts that our scientists are basically working on, जो उस पे दे रहे हैं। ठीक है, always focus on that। Failures are the part of that, yes you are basically trying। ठीक है, so do not worry about it, we will definitely get success in this as well very soon। Now quickly tell me to the question number 50 guys, 84th CRPF Establishment Day। See, there was a question in the RBI Grade B Phase 1 exam on the coal miners day, और इसी तरीके से यहाँ पर CRPF के रेजिंग डे पर भी एक क्वेश्चन आ सकता है नाबार्ड के अंदर। ठीक है, so quickly tell me the what is the right answer to the question number 50। So absolutely right, you guys are rocking today, I'm really glad to see this guys। The right answer is basically 27th July 2022। so this is basically the right answer to this particular question। So guys, that was all from the today's session। Now all of you are requested to quickly tell me your scores in the comment section, that what exactly was your score in the today's session। तो आपके क्या स्कोर थे जल्दी जल्दी मुझे बताइए। But before that, before concluding this session, there is a very good news for all of you, that we are also running a Independence Day sale here, जिसके अंदर we are offering flat 40% plus additional 10% off for our various courses, that is RBI Grade B, NABARD Grade A and SEBI Grade A। और इसके लिए जब आप करने वाले हैं guys, आपको एक कोड यूज करना है, that is our lovely India। ठीक है, तो इंडिया कोड आप इस्तेमाल करेंगे तो जाके आपको ये डिस्काउंट मिलने वाला है। तो फ्लैट 40% ऑफ प्लस एडिशनल 10% ऑफ, वेरी इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ यू, एंड आई रियली बिलीव दैट यू मस्ट रीप द बेनिफिट्स ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। बट क्विकली मेक श्योर, काइंडली मेक श्योर दैट यू आर बेसिकली यूजिंग द कोड बिटवीन 13th of August to 15th of August। ठीक है, तो आज से ये इंप्लीमेंटेड है और 15th August तक ये वैलिड रहेगा। So do not forget basically to use the code India। ठीक है जी। Now quickly tell me that what exactly are your scores। So Megha Arun is saying that 45, okay, very good। Kanishk Pal is saying 29, so well done। See guys, do not worry about the scores here right now, this is a revision session। ठीक है, आपका स्कोर इंप्रूव हो जाए, that is why this particular session has been taken। तो प्रॉपर रिविजन हो, रिविजन आपका होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, रिविजन जितनी ज्यादा अच्छी होगी उतना ही ज्यादा आपका स्कोर बेटर होगा, इंप्रूव होगा इन द अपकमिंग एग्जाम। ठीक है, तो डू नॉट वरी अबाउट इट, जिसका स्कोर ज्यादा है वेरी वेल डन, बट यहाँ पर आपको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। जितने अगर आपके 45 स्कोर है तो उसको जो 5 क्वेश्चन आपके गलत हुए हैं उसको करिए। ठीक है, हाउ यू कैन क्लोज दैट पर्टिकुलर गैप। और जिसका स्कोर कम है उनको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वी आर डूइंग एवरीथिंग, वी आर कमिंग अप विद दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस एवरी वीक। ठीक है, डू नॉट वरी अबाउट इट, हम रिविजन कराते रहेंगे आपको। यू आर जस्ट गोइंग टू रिलैक्स, सिट रिलैक्स एंड जस्ट डू दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है जी, आई होप दैट दीज आर रियली वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू, एंड आई रियली बिलीव कि आज का जो आपका सेशन है काफी फ्रूटफुल रहा होगा आप सभी के लिए। सो गाइज, इफ यू आर हैविंग एनी काइंड ऑफ क्वेरी विद रिस्पेक्ट टू दिस पर्टिकुलर सेशन, you can just ask your queries in the comment section, and apart from that you can also share your queries at hello@edutap.co.in, and you can also call us at 8146207241। and guys, if you are having any feedback as well, you can just share it in the comment section as well as on this particular part, that is hello@edutap.co.in, that is our email ID। so guys, first of all, it was really good to have you all in this particular session। so now I think that there are no more queries to all of you। आपकी कोई क्वेरीज नहीं है, so we can conclude this particular session। so guys, wish you all happy learning, stay happy, stay healthy and happy independence from the whole team